आर्टिकल 370 से संबंधित एक बहुत बड़ी बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। और इसी पर एक बढ़िया सी कमेंट्री सामने को आई है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक टिप्पणी की और सरकार से कहा कि आज तो आप बहुत खुश रहे होंगे। मतलब आर्टिकल 370 पर 20 से ज़्यादा याचिकाकर्ताओं की दलील पूरी होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार दलील रख रही है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऐसी बात कही जो सरकार को काफ़ी सुकून दे सकती है। जी हाँ, 35A के प्रावधानों का जिक्र करते हुए सीजेआई ने कहा कि लोगों को प्रमुख अधिकारों से वंचित कर दिया गया था और वंचित लोगों की सुनवाई बिल्कुल नहीं की जा रही थी। आर्टिकल 370 को समाप्त किए जाने के अपने फैसले पर सरकार आज काफ़ी खुश हो गई, क्योंकि 1 दर्जन से ज़्यादा याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अब सरकार की बात भी रखी जाएगी, सरकार को भी सुना जाएगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कुछ ऐसी बात कही है जिससे फैसले की ज़रूरत और महत्ता समझ में भी आती है। सीजेआई की टिप्पणी से इधर कुछ विपक्षी दल और कश्मीर के नेता इस फैसले के लिए सरकार को घेरते रहे। 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 35A ने जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को कुछ प्रमुख संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि अवसर की समानता और राज्य सरकार में रोजगार और ज़मीन खरीदने का अधिकार, ये सब अनुच्छेद नागरिकों से छीनता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के निवासियों के पास विशेष अधिकार हैं और गैर निवासियों को बाहर रखा गया है। चीफ जस्टिस केंद्र सरकार के उस रुख पर भी सहमति जताई कि भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो जम्मू कश्मीर के संविधान से कई गुना ऊपर है। उसकी वैल्यू कुछ और है, क्योंकि ये 140 करोड़ लोगों का संविधान है। केंद्र जो सरकार है केंद्र में, उसने अपना तर्क रखा। अनुच्छेद 370 रद्द नहीं होने पर जम्मू कश्मीर के लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार दिए गए, जिसके कारण देश के बाकी लोग मूल अधिकारों से वंचित रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि धारा 35A ने लोगों के मूल अधिकार छीने हैं। और आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 पर भी बहस के साथ साथ 35A पर भी बातचीत चल रही है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थीं। हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से सरकार के लिए बहुत अच्छी खबर आई। हम ये भी जानते हैं कि सरकार ने अगस्त 2019 में ही अनुच्छेद 370 के साथ 35A को समाप्त कर दिया था। आर्टिकल 35A के तहत जम्मू कश्मीर के विधानमंडल को स्थायी निवासियों को परिभाषित करने, उन्हें रोजगार, अचल संपत्ति और निपटारे के मामले में विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट लहजे में कहा कि 2019 में जम्मू कश्मीर से खत्म की गई धारा 35A ने देश के बाकी हिस्सों में रहने वाले नागरिकों के मूल अधिकारों को छीना था और ये अधिकार काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार देता था। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को कुछ खास अधिकार मिले। 1954 में इसे राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया गया था और इसमें स्थायी नागरिकता की परिभाषा तय की गई थी। इस संविधान के अनुसार स्थायी नागरिक वही है जो 14 में 1954 को राज्य का नागरिक रहा और कानूनी तरीके से राज्य में अचल संपत्ति खरीदी हो। इसके अलावा वह शख्स जो 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो, 1 मार्च 1947 के बाद राज्य से माइग्रेट होकर चले गए हों, लेकिन प्रदेश में वापस रीसेटलमेंट परमिट के साथ आए हों। सबसे बड़ी बात तो ये खटक रही है कि जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक राज्य के स्थायी निवासी की परिभाषा में किसी भी तरह के बदलाव के अधिकार वहाँ की विधानसभा को ही था। वह 2/3 बहुमत से इसमें संशोधित कर सकती थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि 35A ने जम्मू कश्मीर के लोगों को अधिकार दे दिए हैं, जैसे वहाँ सरकारी नौकरी वहीं के लोगों को मिलेगी, ज़मीन वहीं के लोग खरीद सकते हैं। क्या इससे देश के बाकी के लोगों के अधिकार प्रभावित नहीं हो रहे हैं? सरकार ने जब अपना पक्ष रखा तो उसने कहा कि 35A ने जम्मू कश्मीर के लोगों को इतने अधिकार दे दिए कि बाहर के लोगों को कोई, लेकिन हम जानते हैं अनुच्छेद 19 में किसी नागरिक को कहीं भी रहने का अधिकार है और जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों में रहने वाले लोग वंचित रह जाते हैं। आपको बताएं
चीफ जस्टिस ने पूछा कि प्रस्तावना में जो सेकुलर और समाजवाद शब्द जोड़ा गया था क्या वह जम्मू कश्मीर के लोगों पर लागू नहीं होता। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 42वें संविधान संशोधन के बाद समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं किए गए, यहाँ तक कि अखंडता शब्द भी वहाँ नहीं था, मौलिक कर्तव्य भी वहाँ नहीं थे जो भारतीय संविधान में मौजूद हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 35A के प्रावधानों के तहत दशकों से काम कर रहे सफाई कर्मचारियों जैसे लोगों को जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों की तरह समान अधिकार नहीं हैं। यह भेदभाव 2019 में प्रावधान निरस्त होने के बाद India's Chandrayaan-3 Vikram lander became the first craft to ever touch down at the lunar South Pole on August 23. India became a powerful country in the world, and the probe has wasted very little time scientifically exploring an environment that no mission from any country has ever visited on South Pole. Now, one instrument abroad, the Chandrayaan-3 mission's moon rover Pragyan, has found surprising traces of sulfur within the lunar South Pole's soil, called laser-induced breaking down spectroscopy (LIBS), and created by the Laboratory for Electro-Optics System in Bangalore. That instrument probed the lunar surface by quite literally obliterating it and observed a substance. LIBS fires laser pulses at a sample, which then vaporizes the substance into a brief plasma. The instrument picks up light emitted from that plasma and analyzes the wavelength to discern what element lie within, means which element present inside. So when LIBS turned its laser into the lunar South Pole soil, the instrument found the expected mileage of aluminum. It may be melange of calcium, melange of chromium, melange of iron, and magnesium option titanium and silicon, but with an added dash of sulfur. You know that it's very important, quite important. Orbiting probe crossing over the moon's south pole had never previously detected sulfur, nor did they have the feasibility to do so. According to statement by the Indian Space Research Organization, 3 is leading the way for future missions such Artemis 3 to land at the lunar south pole. This region on the moon is an attractive place for humans to build a lasting presence due to the fact that water ice is located underfoot. Future moon dwellers can potentially tap into that water for consumption or even to create a rocket propellant instead of depending on water shipped from Earth. Jai Hind, Jai Bharat. United States Congress clears historical deal to jointly make jet engines for Indian Air Force. In a big boost to Indian American defense cooperation, the US Congress approved of the deal between Aerospace and Hindustan Aeronautics to produce F-414 fighter jets engines for the Indian Air Force. Everybody know that in a major push for Indian US United States defense cooperation, the United States Congress clear GE Aerospace agreement with state-owned Hindustan Aeronautics Limited to produce fighter jet engine for the Indian Air Force. You know that the deal was struck between India and US during Prime Minister Narendra Modi state visit to the United States in June. Now, the US Congress has given its nod to Biden administration to pursue the GE jet engine deal with India, paving the way for the implementation of agreement with Hindustan Aeronautics Limited that includes unprecedented technology
transfer manufacturing of the jet engines in India. The licensing arrangement. You know that Russian fighters aggressively hunt US drone near Crimea. Moscow challenges direct US participation in Ukraine war. It means that Russia has started challenging US participating in the conflict in Ukraine, increasing the likelihood of an uncontrolled escalation. The US has been participating in the Ukraine conflict since 2014. Much of the US participation is direct, but some participation is through proxy vessel state in NATO, including former great powers UK, France, Germany. In the following text, a reference to the US implies the US and its NATO proxies. Existing US participation, there are two kind of things. One kind of things peace, second one is war. Without officially putting boost the ground in Ukraine, the US is participating in practically all the aspects of the conflict, filling weapons, ammunition supply, airborne air surveillance using E3 AWACS, airborne and space-based ISR communication, command and control, live data link streaming to air defense system during active operations. British, French, and US service personnel are stationed at Ukrainian air and naval bases, operating drone programming weapons such as JDAM, glide bombs, Storm Shadow, and Scalp missiles, operating AD systems such as Patriot and NASAMS, and operating maritime and airborne drones. The diversity of weapon systems include into armed forces of Ukraine AFU and short span of time in which they have been included makes it highly likely that most high technology weapon systems operationally deployed within Ukraine territory are manned by US NATO personnel. It is also highly likely that the weapon system continue to be in a inventory of the supply nation even after they are operationally deployed in Ukraine. Such an arrangement would simplify the provisioning of spares for the weapon systems from the donor owner country, transfer of the weapon system to Ukraine, and provisioning for the spares would be a logistic nightmare that Ukraine would need a lot of trained manpower to handle manpower that it likely doesn't have. There is also question for trust in the logistics management, knowing the Ukrainian proactivity for correction. Besides bar fighters deployed in Ukraine, thousands of offshore US service personnel stationed in the US and other NATO nations are actively participating in the conflict, analyzing large volumes of data streaming in the form of US topaz radar imaging and crystal option satellites and drones. Global and Hawk and MQ-9 Raptor. Ukraine focus on Crimea. Following the failure of its counter-offensive launched on June 4 to make a rapid headway, Ukraine had focused on maritime and airborne drone attacks on Crimea in a seemingly separate effort to keep the morale of its force and citizen high. This is very important. Jai Hind, Jai Bharat. United States Congress clears historical deal
to jointly make jet engines for Indian Air Force. In a big boost to Indian-American defense cooperation, the US Congress approved of the deal between Aerospace and Hindustan Aeronautics to produce F-414 fighter jets engines for the Indian Air Force. Everybody know that in a major push for Indian US United States defense cooperation, the United States Congress clear GE Aerospace agreement with state-owned Hindustan Aeronautics Limited to produce fighter jet engine for the Indian Air Force. You know that the deal was stuck between India and US during Prime Minister Narendra Modi state visit to the United States. Narendra Modi state visit to the United States in June. Now, the US Congress has given its note to Biden administration to pursue the GE jet engine deal with India, paving the way for the implementation of agreement with Hindustan Aeronautics Limited that includes unprecedented technology transfer manufacturing of the jet engines in India. The licensing arrangement जानते हैं चाऊ माऊ आप कहते हैं चीनी हिंदी भाई भाई, लेकिन वो अपने कर्मों से बाज नहीं आते। उनके भी कर्म वैसे ही हैं जैसे पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान टेररिस्ट बनाता है और ये जासूस के भेज में टेररिस्ट हैं। जासूस भी टेररिस्ट ही माने जाएंगे। आपको बता दें कि आजकल एक नया मैटर शुरू हो गया है। साल 2017 में कम्युनिस्ट पार्टी के 19वें सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक जादुई हथियार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चीन के महान कायाकल्प के लक्ष्य को साकार करने के लिए हथियार बेहद ज़रूरी है। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मिशन को सफल बनाना है तो एक व्यापक देशभक्तिपूर्ण यूनाइटेड फ्रंट तैयार करना होगा। और आपको बताएं, शी जिनपिंग ने जिस जादुई हथियार का जिक्र किया उसका नाम है यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट। इस यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट UFW सीधे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के प्रति जवाबदेह है। इस डिपार्टमेंट का काम है चीन के एजेंडे और प्रोपेगेंडे को फैलाना। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है दुनिया भर में फैले चीनी लोगों का और जरिया बनाया जाता है दूसरे प्रभावशाली लोगों को। पार्टी महासचिव के रूप में शी ने एक डिपार्टमेंट में बड़ा सुधार किया और सुधार करने के बाद काफ़ी सारी नीतियाँ बदली। जय हिंद, जय भारत। Military sees disputed island in the South China Sea as the Philippines and Australia join bar drills. Over the weekend, US, Australia and Philippines forces conducted a joint wargame smelting the retaining of an island in the South China Sea. The brazen signaling comes after China upped its aid in a South China Sea. The US armed forces are underscoring that the Chinese aggression, including using water cannon against the Philippines vessel, needs to be challenged and check what is happening. As the three countries' forces are undertaking a joint exercise, the commander of a US Navy 7th Fleet barge in the Philippines and met with a Vice Admiral Alberto Carlos, head of the Philippines Western Command overseeing the South China Sea. Vice Admiral Carl Thomas told returns, "You have to challenge people. I would say overtaking in a gray zone when they are talking a little bit more and more. Pushing you have got to push back. You have to sail, you have to operate." The 7th Fleet of US Navy, headquartered in Japan, is the largest of the forward deployed fleet. It operates as many as 70 ships, 150 aircraft and 27,000 sailors. It covers an area of 124 million square kilometers from base in Japan, South Korea, Singapore. More than 2,000 Australian and Philippines defense personnel and US Marines
are participating in the war games that incorporate amphibians, landing, and air assault drills. Two Australian Navy vessels, HMAS Canberra, HMAS Anzac, and Philippines Navy are also participating in exercise. The drill will occur in a different training locations in the Northern Luzon Command and the Western Command from August 14 to 31. The war game involved troops arriving in amphibian assault vehicle by parachute and on boards US Osprey aircraft to storm a beach. Two advanced Australian F-35 fighter jets provided close air support, and Australian warship secured the surrounding waters. Australian Defence Minister Richard Marles is observing the drills with Filipino President Ferdinand Marcos. J.R. Marles, who has pledged to start joint marine patrols in the heavily contested South China Sea, in a significant pushback to China. It is important aspect of how we prepare for any eventualities, considering there have been so many events that attest to the volatility of the region. Filipino President Marcos said. Australian Prime Minister Anthony Albanese will visit the island nation in September. Will maritime issue, defense and security on agenda. In 2016, the International Tribunal in the Hague declared the 9-dash line invalid and a violation of UN Convention on a Law of Sea. UNCLOS China, refusing to accept the ruling, continued militarizing the island, and its militia continue to harass the Philippines vessels. While Manila has UNCLOS on its side, its military weaknesses in the face of the formidable foe has not gone unnoticed. That is why the Marcos administration, since taking office in June 2022, has been fortifying its defense and strategic tie with the US, Australia, Japan, and India, Quad countries. During his US visit in May, Marcos and US President Joe Biden agreed to new guidelines on the country's 1951 Mutual Defense Treaty. The US retreated that it would aid the Philippines in the event of an attack on its anywhere in the South China Sea. The guidelines also acknowledged the threat posed by grey zone tactics employed by China. In return, the Philippines agreed to add 4 more military bases that the US could access, sticking to its commitment as US Navy plane flew overhead as to Philippines. Boats breached a Chinese Coast Guard blocked to replenish food and other supplies to its force guarding a contested shore. While the Filipino government was dealing with the US, it was also strengthening its tie with Australia also, which has commercial and strategic interest in the South China Sea. Australia and the Philippines in May elevated their relationship to a strategic partnership after the water cannon incident. Australia, Japan, and Philippines conducted joint patrolling in the South China Sea. The US Navy could not join the plant. The Philippines has also signed an unprecedented memorandum of the understanding with the Indian Coast Guard that will, besides other things, include sharing information in the Indo-Pacific. The Philippines is also modernizing its armed forces. It has placed an order for supersonic cruise missile BrahMos. It is also scouting for its first submarine and has shown interest in the Indian-made advanced light helicopter Mk3 and Indian FWD सीधे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के प्रति जवाबदेह है, रेस्पॉन्सिबल है, उसी को रिपोर्ट सौंपती है। इस डिपार्टमेंट का काम है चीन के एजेंडे और प्रोपेगेंडे को फैलाना। इसके लिए
इस्तेमाल किया जाता है पूरी दुनिया भर में चीनी लोगों को फैलाना, और वो टूरिस्ट बन के जाते हैं, जरिए बनाया जाता है, दूसरे प्रभावशाली लोगों को फंसाते हैं। पार्टी महासचिव के रूप में शी ने इस डिपार्टमेंट में काफ़ी सुधार किया है। यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने काम को अंजाम देने के लिए महत्वपूर्ण रिसोर्स मुहैया कराए जाते हैं। चीन ने, अगर हम देखें तो भारत के इसके कामों को लिस्ट बनाएं तो बाहर से बसे चीनी समुदायों को प्रभावित करना, चीनी प्रवासियों का फ़ायदा उठाना और अपने देश की सकारात्मक छवि पेश करने के लिए विद्वानों, नेताओं और पत्रकारों को लुभाना शामिल है। इन प्रभावशाली लोगों का इस्तेमाल लोकतांत्रिक देशों में चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए भी किया जाता है। इसका सबसे हालिया और महत्वपूर्ण उदाहरण है कनाडा का आरोप। कनाडा का कहना है कि उसके यहाँ 2019 और 2022 में हुए केंद्रीय चुनाव में चीन ने दखल दिया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल कह चुके हैं कि उनके देश के मामलों में अगर देखें तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ज़्यादा इंटरफियर कर रही है। यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट की एक और कारस्तानी पकड़ में आ रही है। इसकी ओर से विदेशी विश्वविद्यालय में चीनी छात्र दिए जाते हैं। इन छात्रों का टास्क होता है दूसरे चीनी छात्रों की गतिविधियों पर नज़र रखना और उसके बारे में जानकारी देना। जय हिंद, जय भारत।